Hi everyone, welcome back to the channel. Today's video I'll share my personal view as to why I prefer trading in index. आज के वीडियो में मैं अपना पर्सनल व्यू दूंगा क्यों मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करना प्रेफर करता हूँ. Alright, see the first thing is the percentage movement in index as something you can digest. इंडेक्स में जो एक दिन में परसेंटेज मूवमेंट होता है आप डाइजेस्ट कर पाओगे. 0.65% मूवमेंट आप डाइजेस्ट कर लोगे अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो. इफ़ यू आर इन अ शॉर्ट पोजीशन you will be able to digest a 0.65% move against you. You won't be able to digest a 7.5% move. आप 7.5% का मूव डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे. यहाँ लॉट साइज भी बड़ा होता है. द लॉट साइज ओवर हियर is bigger compared to Nifty. Alright. Oh yes, one more thing. I don't trade in stocks, so I'm really not aware what are the lot sizes of different stocks. मैं stocks में trade नहीं करता हूँ तो मुझे ये सब stocks के lot sizes नहीं पता है. ओके, तो अगर कोई lot size में गलती हो जाए तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना कि मैं stocks में trade नहीं करता हूँ. Second point is index is never in an FNO ban. कभी भी इंडेक्स FNO बैन में नहीं जाएगा. ये स्टॉक्स आपके FNO बैन में जा सकते हैं. येस बैंक फॉर एग्जांपल बीच में FNO बैन में था. येस बैंक वाज एन FNO बैन in the past. I remember. Right now I don't know which stocks go in FNO ban, but if a stock goes in FNO ban and you have a position, you may or may not land in trouble. But it's not the case with index. Index कभी FNO ban में होता ही नहीं, तो वो चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है. थर्ड पॉइंट इज फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है. देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी इन इंडेक्स. यू कैन नॉट टेक फिजिकल डिलीवरी ऑफ इंडेक्स. आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. इट्स रेनिंग ओवर हियर, सो पीछे बारिश हो रही तो बैकग्राउंड नॉइज हो रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर. ऑलराइट, सो मैं ये बोल रहा था इंडेक्स में आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी ही नहीं पड़ती है. उसकी कोई पेनल्टी होती ही नहीं, बिकॉज इंडेक्स हमेशा एक्सपायरी वाले दिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे सेटल होता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज इंडेक्स में हमेशा लिक्विडिटी रहती है. स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होगी. देर आर इंस्टेंसेस वेयर देर इज लिक्विडिटी इश्यूज इन स्टॉक्स. फॉर एग्जाम्पल Amaraja battery trading at 760. If you put a market order over here or here or here or even here, you will be in trouble because the gap is almost 18 rupees. Lot size, I think, I'm not sure, I think it's 3000. So 54,000 तो आप कैसे ही चले जाएंगे अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया यहाँ पे या यहाँ पे. अभी आप बोलोगे, यू विल से व्हाई विल आई पुट इन द मनी मार्केट ऑर्डर. इट कुड बी दैट यू आर होल्डिंग अ पोजीशन एंड यू वांट टू एग्जिट. ऐसा भी हो सकता है ना, आपने पोजीशन ले रखी है, आपको एग्जिट करना है, आपके पास शॉर्ट पोजीशन है, आपको एग्जिट करना है, तो इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा है. देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग स्टक इन स्टॉक्स इफ़ योर ऑप्शन गोज इन द मनी. अगर आपका ऑप्शन इन द मनी चले जाता है तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं. अब यही आप इंडेक्स देखो, बैंक निफ्टी 24 जून. रिमेंबर यहाँ लॉट साइज 25 है. द लॉट साइज ओवर हियर इज जस्ट 25. ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन डाइजेस्ट. अगर आप फंस गए यहाँ, आप निकल सकते हो. थोड़ा सा लॉस होगा, आप निकल सकते हो. यू कैन ईजिली गेट आउट विथ स्मॉल लॉस. सेम ओवर हियर, सेम ओवर हियर. दिस इज स्टिल डाइजेस्टेबल, दिस इज स्टिल डाइजेस्टेबल, स्टिल डाइजेस्टेबल. इन स्टॉक्स में वैसा नहीं होगा. स्टॉक्स में इफ़ यू गेट स्टक यू कुड बी इन ट्रबल एंड यू मे हैव टू टेक फिजिकल डिलीवरी. आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं रहा तो फिर पेनल्टी लगेगी. लॉट्स ऑफ स्टफ. नेक्स्ट पॉइंट इज you cannot manipulate index. You can manipulate a stock. For example, if you have 10 crore rupees, अगर आपके पास 10 करोड़ है, आप मार्केट सेल ऑर्डर लगा दो, ऐसा कैंडल बन जाएगा. You put a market sell order, you will have a candle something like this, or maybe like this, or maybe like this, maybe like this also, this green one. But you put a market sell order in bank nifty, there are FIIs and pros sitting there who will recover it. FII और pro बैठे हैं जो इंडेक्स को गिरने नहीं देंगे.
ऐसा नहीं है FI Pro इसमें नहीं बैठा है. FI Pro is also sitting in stocks, but you can make a quick buck in stocks. आप stocks में जल्दी से करके निकल सकते हो. इंडेक्स में आप उतना मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे. आप 10 करोड़ के शॉर्ट कर दो, वो एक दिन जो शॉर्ट होगा उसका इम्पैक्ट अगले कुछ दिनों तक रहेगा. इफ़ यू पुट अ शॉर्ट ऑर्डर ओवर हियर, you'll see the impact for a few days. You won't see this in index. Right. Next is a stock can be easily affected by news. For example, uh, airlines. There is some news in airlines. Government has banned something. All the airline stock will absorb the news, but the banking stock won't get affected. Index won't get affected that much. If some news comes for the banks, let's say some RBI policy, something comes up, all the bank stocks will take a hit. What I'm trying to say is, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्टॉक्स में कुछ भी न्यूज़ आया, स्टॉक्स के फेवर में, स्टॉक्स के अगेंस्ट में, स्टॉक पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा. स्टॉक बहुत जल्दी इधर उधर मूव करने लग जाएगा. इंडेक्स में न्यूज़ मूवमेंट होता है. देयर इज़ न्यूज़ मूवमेंट इन द इंडेक्स, बट इट विल टेक सम सॉलिड न्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, वॉर इज डिक्लेयर्ड समवेयर, maybe between USA and that ISIS country, or that COVID news which was there in the last year. It was a big news. It impacted the whole country. Maybe GDP data, it's very bad or it's very good, it will impact the index. एंड दीज न्यूज़, दीज काइंड ऑफ न्यूज़, ऐसे न्यूज़ बहुत कम आते हैं. ऐसा नहीं है नहीं आते, आते हैं बट बहुत कम आते हैं. बट स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ यू विल गेट टू सी एवरी डे. हर दिन कुछ ना कुछ स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ आता ही है. फॉर एग्जांपल, बैंक में लोन डिफ़ॉल्ट हो गया 5,000 करोड़ का, एंड कोई पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो इस कंपनी को नुकसान हो गया, एंड स्टफ लाइक दैट. सो स्टॉक्स विल बी कम्प्लीटली न्यूज़ कंट्रोल्ड. इंडेक्स इज़ नॉट रियली न्यूज़ कंट्रोल्ड, very few instances. The last point is, you won't see an index hitting circuit very easily. Index circuit hit नहीं करता है जल्दी से. I remember Bank of Rajasthan share some 10 or 12 years back. For 4 days it was on upper circuit mode because it was absorbed by ICICI Bank. बैंक ऑफ राजस्थान 4 दिन तक कंटिन्यूस अपर सर्किट में था क्योंकि ICICI बैंक ने उसको टेक ओवर या मर्ज कर लिया था. इंडेक्स में ऐसा होता है क्या? हैव यू एवर सीन इंडेक्स ऑन अपर सर्किट फॉर 4 continuous days? नो, because index barely moves 5% in a day. See, 0.65% move. And if we look at Bank Nifty, 0.95% move. Now some say, कोई लोग बोलेंगे अरे सर 330 पॉइंट मूव हो गया. बॉस 330 पॉइंट्स ऑन 35,000. 35,000 पे 330 पॉइंट्स, ये 42 रुपीज़ पे 2 रुपया मूव हुआ है. इट हैज़ मूव 2 रुपीज़ ऑन 42 रुपीज़. लुक एट दैट ऑल्सो ना. वी ऑलवेज गेट स्केर्ड, ओ निफ्टी हैज़ मूव 100 पॉइंट्स. 100 पॉइंट्स ऑन 15,000 यार. 15,000 और 15,500, 15,700, वॉट एवर. नाउ दिस गाय, वन सेक, this guy has moved 400 points on 12,000 rupees, and this has just moved 330 points on 35,000 rupees. There's a huge difference. बहुत फ़र्क है इसमें. 35,000 पे 300 रुपये मूव होना और 12,000 पे 400 रुपये मूव होना. I hope you guys are understanding. So these are the reasons why I prefer trading in index, because it is very much stable compared to stocks. You cannot manipulate it. You can easily get out in options. अगर even though if you get in the money, अगर आपका in the money भी हो जाता है, आप निकल सकते हो. थोड़ा सा लॉस खा लोगे, but not as high as stocks के जितना लॉस नहीं होगा आपको. So this concludes the video. One tip which I wanted to share is, people like to draw trend lines on their chart. What I've usually seen is something like this. However, if you draw something like this, maybe for this candle, in future you won't be able to know where is this resistance point. आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको पता नहीं चलेगा
ये रेजिस्ट, ये जो लाइन है आपने किस कैंडल के लिए बनाई है? अब मान लो आप यहाँ बनाते हो, इफ यू ड्रॉ इट ओवर मे बी हियर, so you won't be able to know it is for this candle or something over here or here or here or what. So an alternative is use this one, horizontal ray, and draw it over here, maybe over here. So अगर मैं जैसे जैसे फ्यूचर में जाऊंगा, ये स्टॉक मान लो, अरे यार इसके ड्राइंग टूल्स आई डोंट नो because I barely use it here, sorry. If it starts going up and it comes here, so you'll see, okay, this has a resistance. You'll go back and see where is this resistance. Okay, this was recently created, this was recently created, something like that. But if you have a line which is this, and the stock moves up, स्टॉक यहाँ चला गया, आप ढूंढते रह जाओगे भाई रेजिस्टेंस कहाँ है, ये कहाँ क्रिएट हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, आपको बहुत दिक्कत होगी ढूंढने में. So I hope this tip was helpful, and do like the video, leave your comment, your thoughts, and you can join the Telegram channel. It's 100% free of cost. All the end of day reports are shared with you so that you can take next day's trade. All right, so see you in the next video.